डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद क्षमा। आज हम आपकी फ्लेमिंगो की पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी डिस्कस करने जा रहे हैं एंड इसके पोएट हैं जॉन कीट्स। So without wasting time, let us move ahead. John Keats was a British romantic poet. Although he was a trained surgeon, but then he decided to devote himself wholly to the poetry. उन्होंने ये सोचा था कि मैं पोइट्री ही लिखूंगा क्योंकि उन्हें वो ज्यादा अच्छा लगता था. His power to sway and delight the readers lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language. तो उनको ये सब बहुत अच्छे से आता था and he was a worshipper of beauty and a master craftsman. उनकी जो फर्स्ट एपिक पोएम थी उसका नाम था एंडीमियन. इट वाज अ पोएटिक रोमांस एंड इट वाज अ लॉन्ग नैरेटिव. 4 बुक्स उन्होंने उसमें लिखी थी. A Thing of Beauty is the opening line of a book one of it. Book 1 की जो पहली लाइन है वो है A Thing of Beauty. It is based on the Greek myth of Endymion. Endymion एक ग्रीक मिथ है जिसमें एक शेपर्ड होता है और शेपर्ड की बिलवेड होती है मून गॉडेस सेलेन. The poem elaborates on the original story and renames Selene as a Cynthia. The enchanted youth who lived in Mount Latmos resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea. तो वो इधर उधर घूमते थे because he wanted to resolve to seek her out. So it is all about that romance. Now the theme of the poem is that जो भी सुंदर चीज है, anything that is beautiful, it is a source of constant joy. इट ट्रांजेंट टाइम. ट्रांजेंट टाइम का मतलब है कि ये इसकी जो लवलीनेस है, जो इसका ब्यूटीफुलनेस है, वो हमेशा इंक्रीज होती जाती है और ये कभी भी फेड नहीं होती है. इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस. इट विल नेवर फेड अवे. अ ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अस प्लेजर एंड इट एलिविएट्स द सफरिंग. सफरिंग जितनी भी ह्यूमन बींग्स की है उसको वो एलिवेट करती है, मतलब रिड्यूस करती है, खत्म करती है. और it has the power to remove darkness and negativity and help us survive when there is a dearth of noble nature or when one is surrounded by evil. So it is the theme is that we can always survive when there is a dearth of noble nature by simply recalling back anything that is beautiful or looking at the thing which is beautiful. It is like a shade that gives us you can say relaxation. It gives us joy and it gives us sound sleep which is full of sleep. Sound sleep which is full of health and happiness. Now let us come to the synopsis of the poem. A thing of beauty is a joy forever, its loveliness and these are the starting line of the poem. And a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. ये चिल्ड्रन, अब ब्यूटीफुल जो चीज है, इट इज अ सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय. ये हमारे लिए हमेशा के लिए ही एक जॉयफुल चीज होती है और इसकी जो लवलीनेस है वो कभी भी खत्म नहीं होती है. एनीथिंग विच इज ब्यूटीफुल, एनीथिंग विच गिव्स अस जॉय इज अ ब्यूटीफुल थिंग. So with the passage of time and its impact never fades away, it provides a pleasant shelter as under the shade of trees. जैसे कि शेड हमें एक ग्रूव प्रोवाइड करते हैं, एक ट्रीज हमें एक ग्रूव प्रोवाइड करते हैं, हमें एक शेड प्रोवाइड करते हैं, एक शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, एंड वी कैन रिलैक्स अंडर द शेड ऑफ द ट्री. द सेम इज विद द थिंग ऑफ ब्यूटी. ये हमें एक ऐसा शेल्टर, ऐसा जॉय प्रोवाइड करती है जिसमें कि हमें मतलब वी फील रिलैक्स्ड, वी फील हैप्पी एंड वी कैन ऑलवेज रीजुविनेट अवर सेल्फ. हम अपने आप को फिर से उसमें प्रसन्न चित्त पाते हैं. इट प्रोमिसेस अस अ साउंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड पीसफुल ब्रीथिंग. क्योंकि अगर हम रिलैक्स करेंगे तो हो सकता है कि हमें स्लीप भी आ जाए. स्लीप आएगी तो इट विल बी लाइक ए sleep which is full of sweet dreams, and when it is full of sweet dreams it will promote our health and happiness as well. So dear children, इसमें हमारा कुछ ऐसा कोई ज्यादा इसमें समझने का मतलब ज्यादा कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है. because anything that is beautiful, it is a joy forever. Its loveliness will increase, it will never pass into nothingness. rather it will provide a bower quiet for us. bower कहते हैं एक शेडी प्लेस को. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि एक शेडी प्लेस हमें प्रोवाइड करती है विच प्रोमिसेस sleep which is full of sweet dreams, and hence it promotes our health and happiness. Now moving on to the second stanza. Therefore on every morrow we are reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despotence of the inhuman dirt, of noble nature of the gloomy days, of all the
unhealthy and over-darkened ways. Now, life on the earth would be painful without anything that is beautiful around us. As per the poet, the life would be very painful because the thing of beauty are like wreaths of flower. Wreaths of flower, जो flower के bend होते हैं, जो एक circular उसमें होते हैं, उन्हें wreaths कहा जाता है. And these are the poet, as per the poet, because the things of beauty is like a wreath of flower, and we weave a wreath of flowery band that keeps us attached to the beauties of the earth. It is the beautiful memories that tie us to this earth. तो इसके कहने का मतलब ये है पोएट का कि because there are beautiful things, so every morning we find ourselves bound to the object of the earth. और उस ऑब्जेक्ट में हमारा एक उसने जो पोएट ने डिस्कस किया है वो किया है रीड. वी आर नॉट लिटरली वी की एवरी डे वी गेट अप एंड वी रीड अ फ्लावरी बैंड, इसका मतलब ये नहीं है, बट पोएट का मतलब ये है कि एवरी डे हम अपने आप को अर्थ के ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट से अपने आप को अटैच्ड पाते हैं. और इसीलिए इन स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, इनह्यूमन डर्ट, नोबल नेचर, ग्लूमी डेज, इन सब के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट कि यहाँ पे there is a dearth of noble natured people. dearth कहते हैं किसी भी चीज की कमी को. There are gloomy days, sad days. There are times when our spirits are sad, we are painful. तो इन सब के बावजूद भी, in spite of all such, there are some shapes of beauty that moves away the pall from our dark spirit. कुछ ना कुछ ऐसा होता है हमारे आसपास जो कि हमारी जो पेनफुल स्पिरिट्स हैं, जो सॉरोफुल स्पिरिट्स हैं, उनसे जो है वो सॉरो निकाल लेते हैं और हमें हैप्पी कर देते हैं. तो these things are beautiful things. It can be a flower, it can be a wreath, it can be anything. It can be anything that provides us happiness and joy. Now, as per the poet, life is a struggle, and the biggest cause of our struggle is malice, disappointment, and lack of noble qualities. Our unhealthy and evil ways give rise to troubles and sufferings. They depress our spirits. They are like a pall of sadness over our lives. But then, anything that is beautiful is it can provide us some relief, some relaxation. So a thing of beauty in any form, that it removes the pall of sadness, it removes the suffering from our lives, it makes human beings love life, and that is why we say a thing of beauty has a soothing effect and it elevates our spirits. तो हमारी spirits को elevate करती है जो भी चीज beautiful है, और हमारी spirits को, dark spirits को, painful spirits को वो एक soothing effect भी provide करती है as per the poet. So ये बार बार जो theme है इसका बार बार वो it is being proved by the poet कि that anything which is beautiful is a source of joy and happiness. It never passes into nothingness, rather its beauty keeps on increasing every day. Now, for example, the poet has taken some trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep as well, and such are daffodils. Since हमारा जो poet है, he was he was a shepherd, तो उसने simple sheep का example लिया है, उसने daffodils का example लिया है, उसने trees old and young का example लिया है, and he has taken example of the cooling the rills, the clear rills, which provide a cooling cover for everyone. So against the hot season is the mid forest break. तो उसने poet ने ये कहा है कि there are things which are a source of happiness and joy, and they are the trees. It can be an old tree, it can be a young tree, because it provides a shady boon. It provides a shady boon, a kind of a shade in which we can relax, we can sit, and hence we may have a sound sleep as well. और जब sound sleep होगी तो it will promote our health and happiness also. So it is not only the human beings which take shade under the tree, it is also the sheep. वो कहता है कि simple sheep को भी वो एक shade provide करती है. And the thing, another thing which the poet has discussed is daffodils. Daffodils are the flowers, और वो कहता है वो फूल इतने सुंदर होते हैं कि वो भी it can be also termed as that they are the thing of beauty, because उनको देख के हमारे चेहरे पे स्माइल आती है और हमें अच्छा लगता है. And also the poet says the clear rills. Clear rills कहते हैं जो छोटे छोटे streams होते हैं जो
फाउंटेन्स होते हैं जो पहाड़ों पे निकल रहे होते हैं उन्हें कहते हैं क्लियर रिल्स। तो कहता है पोएट कि दे कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी बिकॉज दे प्रोवाइड अ कूलिंग कवर फॉर अगेंस्ट द हॉट समर और यू कैन से द स्कॉर्चिंग सन। तो स्कॉर्चिंग सन के अगेंस्ट जो हमें रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, कूलिंग कवर प्रोवाइड करते हैं, वो क्लियर रिल्स होते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। And they also, the poet says, rich with a sprinkle of fair musk rose blooms। और उनकी जो वहाँ पे मस्क रोज जो ब्लूम हुआ होता है, that is also very full of fragrance। तो वो भी एक जॉय की चीज हो सकती है as per the poet। So there can be anything and everything that can provide us joy, and if something providing us joy and happiness for us, that is a thing of beauty as per the poet। So the things of nature are boon for humanity. The sun, the moon, the trees, old and young, they all are sources of happiness for us। Now the poet says that the trees हैं और ये आपके clear rills हैं, the stream of water हैं, the daffodils हैं, they bloom with the green surrounding in which they grow, the thick mass of ferns look grand with their beautiful musk roses। So these all are the things of beauty and they provide us joy and happiness। और इनकी जो beauty है, it will never fade away, it will be like this only, it will never go away, and it will be eternally, it will keep on giving us joy and happiness। Now, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read। Now, the poet has not only discussed about the thing that are in nature or anything that is, you can say, a flower or sun or moon or trees. The poet now has discussed about the achievements of the great warriors. The great warriors, those who have embrace the death in a very, you can say, glamorous manner। जिन्होंने माइटी जो माइटी डेड हैं, उन्होंने जो जो भी उनके अचीवमेंट्स हैं या जो जिस तरीके से भी उन्होंने डेथ को एम्ब्रेस किया है, दे ऑल आर अ थिंग ऑफ ब्यूटी एज पर द पोएट। दे इंस्पायर अस थ्रू देयर नोबल वर्क। उन्होंने इतने अच्छे काम किए थे कि वो हमें इंस्पायर करते हैं। सो एज पर द पोएट, ब्यूटी इज नॉट लिमिटेड टू बर्थ एंड ग्रोथ बट कैन ऑल्सो बी सीन इन मैग्निफिसेंट डेथ ऑल्सो। ये कहना चाह रहा है पोएट, बिकॉज यहाँ पे उसने माइटी वॉरियर्स की बात करी है। जो वॉरियर्स हैं, द वे दे मीट देयर एंड, द वे दे एम्ब्रेस डेथ इज रियली वेरी good, or you can say it is a, you can say, a glamorous way they have met their end। It can be done only by the people, those who are mighty, those who are powerful, those who can lay their lives for the country। So it is not only the beauty which is limited to birth and growth, but it can also be seen in magnificent death। So the manner in which they have embraced death is worth praising। तो पोएट हमें यही कहना चाह रहा है। सो अ ब्यूटीफुल थिंग इज अ सोर्स ऑफ जॉय, just as the lovely tales we have heard or read give us profound happiness। And these things of beauty are endless source of nectar that pours down to us from the heaven, bringing eternal joy for the soul's grandeur। Fine. So they are just like elixir of life. They are just like that, as if they are the nectar of life, because they never diminish, they never go away, they never fades away। They are the constant source of pleasure and delight, an endless fountain of joy that seems to be a precious gift from heaven। So, as per the poet, it is not only the death, or you can say the birth, or this thing, it is the death in which the mighty warriors have met there, and it is also the source of happiness। Thank you for watching, and kindly like, subscribe, and share.